देखो बेटा, मैंने क्या किया, उनकी रिप्लिकेट किया जो वो कहना चाह रहे थे उस दिन। मैं तुम्हारे से लिया। ओके, एंड द होल थिंग इज व्हाट ही सेड वाज, the auditor said was that I export the data using the multi-ledger printing. ठीक है ना? तो बिकॉज यू क्वेश्चन में कि भैया हो क्या रहा है, राइट? तो इसका हमें साइड को चेंज करना है, हमें मतलब एक्सप्लेन नहीं करना है। बिकॉज आई थिंक आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन में ज्यादा आ रही है, राइट? आपको क्लियर हो नहीं पा रहा है, राइट? सो मल्टी लेजर प्रिंटिंग जो है उसमें कैसे किया, व्हाट ही डिड वाज ही सेड लो टू डी, then go down to A, account books, and then go down to L, ledger. Then what you do is, then you go down to this export, and then you go down to others. That's what he said. That is the all ledger accounts and so forth, right? So you've got the sales vouchers, you've got all these bill receivable and all. But what I do is I go down to group of accounts. That's what he said, right? And then I say that, okay, fine, within the group of accounts, I go now, maybe I'm missing something. Because you have to ask them to show कि भैया वो कर कैसे रहा है, because the output which is coming is completely ori, right? So now this is here, and I go down to sales account news. I changed the name. Now I go down to configuration. I don't want to export it in Excel, and I say condensed detailed. I say inventory details हम लोग दे रहे हैं, right? Narrations, yes, right? I go down here, yes, enter, and I go down to Excel. That's what it is. Am I clear? That's what he said, right? And then I say enter, and I say sales accounts export dot XLSX. Okay, that's what he said. And I go here and I say export. When I export this particular report, I get something like this. Now, within this, how is he doing a lookup? You can't do anything with this. So I confirmed it with Claude. You cannot do anything with this report. Plus it's one company. So we are on the right track. जो भी होता है ना वो बेवकूफ बना रहा है, राइट? तो ये सी कोलन है, बिकॉज हमें कंसिस्टेंटली अभी हमें देखना है कि दिस थिंग इज सो। इफ यू लुक एट आवर क्लाउड कोड प्रोजेक्ट हियर एंड वी गो डाउन हियर, Nutika, right? So you'll have to teach me how to make the Nutika this thing here, right? If I look at this one, this is clean. Plus, I am giving the complete ledger voucher, voucher register, custom collection, as well as the day book output in one report. So if I look at this, I can do analysis with this, right? I can't do anything with it. So basically, हम लोग बेवकूफ बन गए उसमें. Or he made us a fool. I don't know what he did. Okay. But what was surprising was that he did it in front of his boss. Right. So I don't know how it exactly it works. ठीक है, तो ये तुम्हें पूरा क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? So there is a limitation in our marketing. It's not to do with the product now. तो अगर वो नहीं उठा रहा है, there is a limitation in the marketing. अगर वो ये कह रहा है, so the objections which we have got are, I can add credit note to sales register. Question is, how do you know that the given credit note is linked with sales and not purchase? ये भी तो हो सकता है ना कि परचेज के साथ हो.
Correct. The second one is I use lookup. So we will say show. Then sample data is now Rohit underscore 24th underscore 9th underscore 2024. इसके आगे कुछ नहीं है, राइट? इसमें we will have various scenarios. Is that clear? और क्या थे? बिकॉज आई एम शॉर्ट कि इतना इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? इज इट क्लियर? राइट। तो ये है। अब ये जो है बेटा, हमें सेल्फ रनिंग का वो करना पड़ेगा। तो आई चेक्ड इट आउट एवरीवे। वाउचर रजिस्टर आई हैव आल्सो चेक्ड इट आउट, राइट? वाउचर रजिस्टर आई हैव आल्सो चेक्ड आउट, एंड डे बुक आई आल्सो हैव चेक्ड आउट। तो उस दिन आई गॉट कंप्लीटली कंफ्यूज, आई डिड नॉट नो दिस स्क्रीनशॉट। मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ये अदर्स का ये इस तरीके से कर रहा है। So he was completely riffraffing with us. He riffraffed in front of his boss. अब वो पता नहीं क्या है। ये क्रेडिट यहाँ पे, ये नंबर कुछ है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है एग्जैक्टली exactly। इससे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।